Abhayacharya Bhaktivedanta Jai Natila Visrom Bishop Bhagavan Savadivata Classes, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Ananta Guru Vaishnava Ki Jai, Namacharya Sri Vigraha Ki Jai, Brahma Sri Caitanya Mahaprabhu Sri Vigraha Ki Jai, Sri Radha and Krishna Ki Jai, Vrindavan Ki Jai, Ki Jai, Shri Hare Krishna Ki Jai, Sarvasargam Shri Ki Jai, Shambhir Bhaktivedanta Ki Jai, Jai Gobre Parande, Hare Hare Bo. All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Shri Vigraha, Gobre Parande, Hare Hare Bo. Today, Monday, 20th of March, 2017, we are reading from Sri Caitanya Mahaprabhu, chapter 9, text, starting with text number 62. What's on the board? 62? 64. श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं प्यार संख्या 62 से 64। So I'll read the previous text to bring us up to 64. Krishna Bale Acharya Prabhure Karena Vinay Dikya Sakala Loka Haira Vishmaya. When the spiritual master of the Buddhists began to chant the holy name of Krishna and submit to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the people who were gathered there were astonished. जब वे बौद्ध आचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए, तो वहां पर एकत्रित सारे लोग आश्चर्य से चकित रह गए। So before we go any further, let's say the Guru Parampara pranams, please. Namo Vaishnava Acharyas Namaste Saraswati Devi Guru-Varya Nirvisesha Srinivaya Vaishnavisya Desikara Om Agnati Vidandasya Ginagina Surakaya Jaksur Mritam Gina Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Caitanya Mahaprabhu Krishna Sahaja Name Buddhade Swayam Rupa Kalamani Nadi Swaparadam Vandeyam Sri Guru Sri Vigraha Sri Guru Vaishnava Sri Rupam Sarvata Bhagavata Purana Spansadevam Sarvaitam Sarvaitam Parijana Siddham Krishna Chaitanya Devam Srila आइए हम देखते हैं कि इसका क्या प्रसंग है। तो हम पिछले कुछ प्यारों की चर्चा करेंगे। Mahaprabhu had been debating with a bunch of Buddhists. This is in South India. दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ बुद्ध लोगों के साथ तर्क वितर्क कर रहे थे। This is going back to verse number 15.
verse number 50. तो अभी प्यार संख्या 50 में इसका वर्णन आता है। The teacher of the Buddhist cult set forth the 9 principles of philosophy, but Sri Caitanya Mahaprabhu broke them to pieces with his strong logic. बौद्ध संप्रदाय के प्रचारक ने 9 सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रबल तर्क से उन्हें खंड खंड कर डाले। 51. All mental speculators and learned scholars were defeated by Sri Caitanya Mahaprabhu, and when the people began to laugh, the Buddhist philosophers felt both shame and fear. श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्धिक चिंतकों तथा पंडितों को हरा दिया, और बौद्ध दार्शनिकों पर जब लोग हंसने लगे तो उन्हें लज्जा तथा भय दोनों का अनुभव हुआ। So, Srila Prabhupada comments that all these Buddhists and other philosophers who were present, they were all atheists actually. यहाँ श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सारे जो दार्शनिक नास्तिक थे। Text 52. The Buddhists could understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu was a Vaishnava and they returned home very unhappy. Later, however, they began to plot against the Lord. बौद्ध लोग जान गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव हैं, अतः वे दुखी मन से अपने अपने घर वापस गए, किंतु बाद में उन लोगों ने महाप्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। So crooked philosophers, they could not accept an honest defeat. They were very envious, they were very upset, and so they made a plot for revenge, which is, demoniac. तो जो ये कपटी दार्शनिक हैं, ये जो उनकी पराजय थी उसको वे स्वीकार नहीं कर पाए, जो ईमानदारी से उनको पराजित कर दिया था, तो इसलिए वो षड्यंत्र रचना उन्होंने प्रारंभ किया। 54. Having made their plot, the Buddhists brought a plate of untouchable food before Lord Chaitanya Mahaprabhu and called it Mahaprasada. षड्यंत्र रचने के बाद वे बौद्ध जन अपवित्र भोजन की थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले आए और कहा कि यह महाप्रसाद है। So actually, there was some meat on the plate. तो वास्तव में कुछ मांसाहार पदार्थ था उस प्लेट के ऊपर। 54. When the contaminated food was offered to Sri Caitanya Mahaprabhu, a very large bird appeared on the spot, picked up the plate and its beak and flew away. वह अछूत भोजन, जब ये दूषित भोजन श्री चैतन्य महाप्रभु को लाकर दिया गया, तब एक बड़ा सा पक्षी उसी स्थान में प्रकट हुआ और थाली को अपनी चोंच में दबा ली और उसे लेकर उड़ गया। So the bird picked up the plate. तो उस पक्षी ने उस प्लेट को उठा लिया। 55. Indeed, the untouchable food fell upon the Buddhist, and the large bird dropped the plate on the head of the chief Buddhist teacher. When it fell on his head, it made a loud sound. वह अछूत भोजन उन बौद्धों के ऊपर गिर पड़ा और उस बड़े पक्षी ने वह थाली उस प्रमुख बौद्धाचार्य के सिर के ऊपर गिरा दी। जब वह उसके सिर पर गिरी तो बड़े जोर की आवाज हुई। 56. The plate was made of metal, and when its edge hit the head of the teacher, it cut him, and the teacher immediately fell to the ground unconscious. थाली धातु की बनी थी, अतः जब उसकी धार उस आचार्य के सिर पर लगी तो घाव हो गया। फलतः वह आचार्य तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। 57. When the teacher fell unconscious, his Buddhist disciples cried aloud and ran to the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu for shelter. जब आचार्य बेहोश हो गया तो उसके सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगे और शरण पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर दौड़े। So this is an example of extreme trauma causing fallen souls, and in this case demons, to surrender to the Lord. तो हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि उनको इतना ज्यादा दर्दनाक अनुभव हुआ, इससे वो इतने पीड़ित हुए और इसके कारण वे परम भगवान के चरण कमलों की उन्होंने शरण ग्रहण की। So they could understand by this occurrence of the plate falling, the bird appearing out of nowhere, picking up the plate and it crashed down and cut the head of their guru,
conscious, then they can understand that, oh, this is some mystic demon, this Mahaprabhu is a mystic, and we're messing with the wrong person. They could understand, actually. Krishna, Mahaprabhu had this mercy. He appeared in the form of intelligence for them. तो जब ये घटना हुई कि ना जाने कहां से वह पक्षी आया, प्लेट उठाई और उनके जो आचार्य हैं उनके सर पर गिरा दी, तो इससे उन्हें लगा कि ये कोई बहुत ही रहस्यमयी घटना है और हम शायद गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हैं। तो महाप्रभु की कृपा से उनको ये बुद्धि उनके अंदर जागृत हुई। So then the disciples, they all cried very loudly and they ran to the lotus feet of the Lord and for shelter. So in other words, out of His mercy, the Lord arose in their contaminated hearts as intelligence. तब वो सारे शिष्य जोर-जोर से रोने लगे और शरण पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर वो दौड़े। So from demons, they suddenly become a little bit surrendered. तो आसुरी प्रवृत्ति से वह कुछ शरणागत हुए फिर। This is our movement. यही हमारा आंदोलन है। Everybody sitting here was a demon at one time or another. यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किसी ना किसी समय पर आसुरिक bad habits, different levels of bad habits, and nobody was really a saintly person until they took up Krishna consciousness. बुरी आदतों के अलग-अलग स्तर पर था जब तक उसने कृष्ण भावनामृत स्वीकार नहीं किया। This is the infinite mercy of Srila Prabhupada, and he passes that on by empowering his representatives. तो ये श्रीला प्रभुपाद की कृपा है जो वो आगे इसको फैला रहे हैं अपने प्रतिनिधियों को। Of course, most of you were vegetarian. I think almost all of you were vegetarian because this is India. मैं अपेक्षा करता हूँ शायद आप में से अधिकतर भक्त शाकाहारी थे क्योंकि ये भारत भूमि है। But in the West, a lot of people can go in the West straight from being mediator to devotee without even passing through being a vegetarian. But usually, our best customers, Prabhupada uses a customer, refer to people that we recruit as customers. तो परंतु पाश्चात्य देशों में जहाँ अधिकतर लोग मांसाहार करते हैं वो सीधे वैष्णव बन जाते हैं इस आंदोलन के संपर्क में आने से बिना शाकाहारी की स्टेज पास किए हुए डायरेक्ट सिर्फ भगवान को अर्पित हो जाते हैं। So in the West, the people that take up Krishna consciousness, usually they have become vegetarians first, but there are exceptions. Sometimes somebody can go straight from mediator to devotee, we see, in the same way we see from this example of Chaitanya Mahaprabhu. तो देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में जो लोग हैं मांसाहार से पहले शाकाहार बनते हैं परंतु कुछ एक्सेप्शन होते हैं कुछ सीधे वैष्णव भी बनते हैं। So we should not underestimate the power of the mercy of Mahaprabhu. हमें महाप्रभु की जो कृपा है उसको कम नहीं आंकना चाहिए। Then our own Srila Prabhupada and then his representatives also are fully empowered by that Shakti of Mahaprabhu. So then that's what gives potency to this movement. तो प्रभुपाद और प्रभुपाद के प्रतिनिधि में ही उतनी शक्ति से empowered हैं, तो इसलिए हमें इस आंदोलन की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। So we should try to appreciate the deep purport of this pastime. तो हमें इसका प्रचार करना चाहिए इस तात्पर्य। These pastimes of the Lord are always designed to teach. परम पुरुषोत्तम भगवान की जितनी लीलाएं हैं वो इस तरह आयोजित की जाती हैं कि जिससे उनको शिक्षा मिल सके। That's true of Krishna, it's true of Ram, it's actually all the incarnations, Brahma, Nishinga, they're all because the Supreme Personality of Godhead is Adi Guru. So that means that he's always teaching. By his Leela he is teaching also. So we are supposed to catch that. If we don't catch that, we have missed the whole point of Krishna consciousness. परम पुरुषोत्तम भगवान आदि गुरु हैं और वो हमें प्रत्येक अपने कार्य से कुछ न कुछ शिक्षा दे रहे हैं और यही सत्य है चाहे वो कृष्ण है राम है वरादेव है भगवान के जितने अवतार हैं तो उन लीलाओं से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं हमें इसको पकड़ना है अगर हम इसको नहीं पकड़ पाते तो पूरे कृष्ण भावनामृत का जो केंद्र बिंदु है हम उससे चूक जाएंगे। So in this pastime we see demons instantly becoming converted, instantly caused by force to surrender to Mahaprabhu, by force, not by philosophy. They were defeated philosophy and they were envious and angry, but now by mystic force, Mahaprabhu, he forces them to surrender. This is our movement. I mean, we don't force people to surrender. The point is,
that the mercy of Mahaprabhu even twists the arm of rotten souls so that they can surrender to this mission. तो यहाँ देखते हैं महाप्रभु ने कैसे डंडे की जोर पर उनको शरणागत कराया। हालांकि पहले उन्होंने उन्हें दर्शन में पराजित कर दिया और परंतु फिर भी वे नहीं माने। तो कई बार देखते हैं कि महाप्रभु जो बद्ध जीव हैं उनका कभी कभार बाजू मरोड़ते हैं उनको इस आंदोलन में शरणागत कराने के लिए। So they were all demons, hardcore demons, envious of the Lord, angry, plotting demoniac plot. देखते हैं a plate of meat, you know. तो देखते हैं वो सभी जो यहाँ पर लोग हैं घोर असुर प्रवृत्ति के थे, कैसे भगवान से द्वेष कर रहे थे। इस प्रकार का उन्होंने षड्यंत्र रचा और एक प्लेट पर मांस का टुकड़ा रखते हुए कहा कि महाप्रसाद है। Then only minutes later, by the mystic power of the Lord, they're suddenly forced to surrender. और कुछ ही मिनटों में देखते हैं महाप्रभु की अचिंत्य शक्तियों के द्वारा किस प्रकार वो शरण ग्रहण करने पर मजबूर हुए। So demons to somewhat surrender souls in minutes only, that's Mahaprabhu. तो जो घोर असुर थे कुछ ही मिनटों में वो कुछ शरणागत हुए, ये महाप्रभु की कृपा है। It's important that you get, so why, you know, what is the acting principle of that? तो आप पूछ सकते हैं क्या यहाँ पर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है। The acting principle is that Mahaprabhu is Radhika. जो सिद्धांत जो यहाँ कार्य कर रहा है वो ये है कि महाप्रभु वास्तव में श्रीमती राधा रानी के भाव में है। He is the personification of her love, of her mercy, of her tenderness. That's who Mahaprabhu is. Not just, you know, sannyasi devotee, no. वो राधा रानी के कृपा, उनके जो प्रेम है, उनकी जो करुणा है, उनके मूर्तिमान स्वरूप है। So, therefore, we see how Mahaprabhu is Ladini Shakti personified, and the whole pastime is arranged under Ladini Shakti. लादिनी शक्ति के व्यक्तित्व है और देखते हैं कैसे जो लादिनी शक्ति के अंतर्गत पूरी की पूरी लीला रची गई। So Mahaprabhu is also Krishna, so Krishna is Yogeshwar, the supreme mystic. So here we see that he's using his mystic power to help some demons surrender, and they're forced to surrender really quickly. It was certainly not their intent to surrender, but suddenly, seeing the mystic power of the Lord, suddenly, therefore, they surrender because they realize, oh no, we're up against some superpower. Okay, we surrender. और महाप्रभु कृष्ण है और कृष्ण योगेश्वर है और जो योगेश्वर है अपनी योगिक शक्तियों का उन्होंने इस्तेमाल किया और तभी हम देखते हैं कि कुछ ही मिनटों में, हालांकि उनकी ऐसा कोई भी उद्देश्य या भावना नहीं था शरणागत होने का। So we have to get the context here. The context we have to get. तो हमें यहाँ पर संदर्भ समझना चाहिए इसका। That they're demons, hardcore demons, offering a plate of meat to the Supreme Lord, and then moments later, they surrender. तो घोर असुरिक प्रवृत्ति के जो लोग भगवान को एक प्लेट के अंदर मीट अर्पित कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बाद शरणागत हो जाते हैं। Really fast. बहुत तेजी से ये सब हुआ। So this is why I'm just stressing on this point. They're total demons trying to, contaminate the Lord with a plate of meat, and then moments later, when they see that their guru is like down and cut on the head, and then they realize, oh my God, we're up against some superpower. Forget it. We're going to surrender. तो देखते हैं कैसे वो भगवान को दूषित करने का प्रयास करते हैं एक मीट उनको अर्पित करके, परंतु फिर देखते हैं कि जो भी घटना हुई उनके खुद के गुरु बेहोश पड़े हैं, उनके सर पर घाव है, तो लगा नहीं तो तुरंत शरणागत होते हैं। Try to understand how astonishing this is. इसको समझने का प्रयास कीजिए कितना अद्भुत है। And try to understand that it's the mercy of Radhika. और ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये राधिका की कृपा है। So now, I'm trying to emphasize hardcore demons intending to do harm to the Lord.
you know, and then moments later, I'm just the build-up for text number 58, which is leading into where we're going there. तो मैं इस बात पर बल बार-बार इसलिए दे रहा हूँ कि ये प्रसंग आपको समझ आए कि पूरे घोर असुर लोग जो भगवान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कैसे वो उनमें परिवर्तन आता है, वो शरणागत होते हैं. So practically they just attacked the Lord with a demoniac plan. And then moments later, next we'll see what happens next. After this mystic display, instant surrender. So we have to get the context here. They're hardcore demons, and then after the mystic display, next verse 58, we'll see how they actually they suddenly surrender because they realize, oh, he is the Supreme Personality of God. Forget it, we're not messing with him. तो व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि उन्होंने भगवान पर किस प्रकार से आक्रमण किया, और अभी हम जो श्लोक प्यार संख्या 58 में देखेंगे किस प्रकार से उन्हें एहसास होता है कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उन्हें लगता है नहीं हम इनसे. Dramatizing here about from night to day is what we're talking about in terms of the mood of from demons to devotees within moments. This is astonishing. तो मैं यहाँ पर उनके जो भाव है उन पर बल दे रहा हूँ कि कितना अद्भुत है, जैसे रात से दिन होना, कैसे उनके भाव बिल्कुल असुरिक थे और फिर वो तुरंत शरणागत होते हैं. So this is all a build up to text number 58. तो ये प्यार संख्या 58 की ओर ले जाती है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं. Now watch the contrast now from demons to devotees within seconds. तो अब आप इसकी तुलना कीजिए कि कितना उनके अंदर भेद आ गया, असुर से पूरे वैष्णव बन गए, भक्त बन गए. Text 58. They all prayed to Lord Sri Caitanya Mahaprabhu, addressing him as the Supreme Personality of God himself. And you see, look at the change now. From envious demons to acknowledging, oh my God, he's the Supreme Personality of God, we surrender. Within moments. That's Mahaprabhu. कुछ ही क्षणों में वो द्वेषी असुर से कैसे भक्त बन गए, शरणागत हो गए, प्रार्थना कर रहे हैं. ये है महाप्रभु. So they said, Sir, please excuse our offense. Please have mercy upon us and bring our spiritual master back to life. उन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान संबोधित करते हुए कहा, कृपया हमारा अपराध क्षमा करें, हम पर कृपा करें और हमारे गुरुदेव को जीवन दान दें. The Lord then replied, 59, to the Buddhist disciples, he said, you should all chant the name of Krishna and Hare very loudly near the ear of your spiritual master. तो महाप्रभु ने उन बौद्ध शिष्यों से कहा, तुम सभी मिलकर अपने गुरु के कान में जोर से कृष्ण तथा हरि के नामों का उच्चारण करो. Text 60. By this method, your spiritual master will regain his consciousness. प्यार 60. इस तरह से तुम्हारे गुरु को चेतना प्राप्त होगी. Following Sri Caitanya Mahaprabhu's advice, all the Buddhists, you see, they all surrendered. All the Buddhist disciples began to chant the holy names of Krishna congregationally. Just see, envious demons, angry demons, real demons, trying to harm the Lord, to surrender and chanting the holy names within moments. श्री चैतन्य महाप्रभु का परामर्श मानकर वे सारे बौद्ध, देखिए लिखे सारे के सारे वहां जितने बौद्ध शिष्य उपस्थित थे, कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने लगे. तो कैसे पूरे जो द्वेषी बिल्कुल असुर, वास्तविक असुर थे, कैसे तुरंत भक्त बन गए. So text 61, when all the disciples chanted the holy names of Krishna, all the disciples, I mean nobody was holding out on being a demon, they all surrendered on the spot. They all began chanting the holy names of Krishna, Rama and Hare. जब सारे शिष्य, यहाँ लिखा है सारे, कि कोई भी इसमें से चुप नहीं था, सारे शिष्य कृष्ण, राम तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे. The Buddhist teacher regained consciousness and immediately began to chant the holy name of Lord Hare. तो बौद्ध आचार्य की चेतना वापस आ गई और वह तुरंत ही हरि नाम का कीर्तन करने लगा. So by the mercy of Mahaprabhu, it goes from total envious demon misleading all his disciples and all this to becoming devotee chanting the holy name, instant mercy. You see? महाप्रभु की कृपा से कैसे उनकी जो द्वेषी मानसिकता थी, तुरंत ही वो भक्त बन गए, शरणागत हो गए.
Now get this. The commentary by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. तो जो तात्पर्य है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा. So they were demons, keep in mind, they were demons. They were not devotees, they were not innocent, they were not, university students that you're trying to make into IYF courses, no. They were hardcore demons. तो वो पूरे असुर थे. But the next thing that Bhaktivedanta Swami Prabhupada points out is that all the Buddhist disciples were actually initiated by Sri Caitanya Mahaprabhu into the chanting the holy name of Krishna, and when they chanted, they actually became different persons. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका करते हैं कि वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्ध शिष्यों को कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए दीक्षित कर दिया, और जब वे कीर्तन करने लगे तो वे वास्तव में भिन्न व्यक्ति बन गए. At that time they were not Buddhists or atheists but Vaishnavas. उस समय में बौद्ध या नास्तिक नहीं रहे, अपितु वैष्णव बन गए. Talking about instant conversion here. हम यहाँ बता रहे हैं कैसे तुरंत परिवर्तन. So consequently they immediately accepted Sri Caitanya Mahaprabhu's order. उनकी फलस्वरूप उन्होंने तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मान ली. So their original Krishna consciousness was revived, and they were immediately able to chant Hare Krishna and begin worshipping the Supreme Lord Vishnu. उनकी मूल कृष्ण भावना जागृत हो उठी और वे तुरंत हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे. So then text 62. So this is a miracle, basically, because the mercy of Mahaprabhu was a miracle, actually, and the mercy passed on, empowered Satyaveshavatar Srila Prabhupada is also a miracle, and the fact that he passes on that Avesh empowerment to his disciples is also a miracle. तो यहाँ देखते हैं महाप्रभु की जो कृपा है कैसे इतना बड़ा चमत्कार है, और महाप्रभु की कृपा जो पास की गई है श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से वो भी चमत्कार है, शक्तावेश अवतार. और श्रीला प्रभुपाद ने जो अपने प्रतिनिधियों को आगे कृपा दी और उनके माध्यम से जो चमत्कार हो रहे हैं वो भी अद्भुत हैं. Srila Prabhupada's disciples in turn, they pass on the Avesh to their disciples. और श्रीला प्रभुपाद के शिष्य आप अपने शिष्यों को ये आवेश आगे पास कर रहे हैं, Become empowered preachers to spread Krishna consciousness. जो कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए सशक्त प्रचारक बन रहे हैं. So this is a continued miracle. तो ये चमत्कार है, निरंतर चमत्कार हो रहे हैं. Because this movement is a living pastime of Mahaprabhu, try to understand. And Prabhupada is inside that living pastime, and we are also inside that living pastime, but we have to open our eyes. क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक जीता जागता लीला है श्री चैतन्य महाप्रभु की, और श्रीला प्रभुपाद इस लीला के अंदर उपस्थित हैं, और हम सब भी इस लीला के भागीदारी हैं, हम इस पर भाग ले रहे हैं. हमें बस अपनी आंखें खोलनी है इसको समझने के लिए, देखने के लिए. So text 62. When the spiritual master of the Buddhists began to chant the holy name of Krishna and submitted to Lord Sri Caitanya Mahaprabhu, all the people who were gathered there were astonished. जब बौद्ध आचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गया, तो वहां पर एकत्रित सारे लोग आश्चर्य से चकित रह गए. So generally in those days, when there was a philosophical debate, a crowd would gather. उन दिनों जब भी कोई दर्शन पर डिबेट होती थी तो पूरा का पूरा भीड़ वहां पर जमा हो जाती थी. There was no television, so they couldn't watch cricket games. उस समय टीवी नहीं था तो इसलिए वो क्रिकेट नहीं देख सकते थे. And because there was no television, they couldn't watch the election results and other kinds of stuff that people do these days. और उस समय टीवी नहीं था तो इसलिए जो इलेक्शन रिजल्ट और इत्यादि जो आजकल जिसमें लोग लगते हैं वो भी नहीं देख सकते थे. So what was the recreation? तो उनका मनोरंजन क्या था? Philosophical debates. दर्शन पर तर्क वितर्क करना. Well, nowadays, up to 50,000 people can crowd into a cricket stadium, right? आज के समय एक क्रिकेट स्टेडियम में शायद 50,000 लोग वहां पर एक साथ एकत्रित हो सकते हैं. In those days, the same number of people might gather together to hear a good philosophical debate. Then, they didn't have a stadium,
but somehow or other they would gather together and somehow they would be able to understand what was going on in a philosophical debate. और उस समय शायद इतने ही लोग एक जगह इकट्ठे होकर जो वहाँ पर डिबेट हो रहा है उसके लिए एकत्रित होते थे। हालांकि वहाँ स्टेडियम नहीं होता था, परंतु इतने लोग इकट्ठे होते थे और वो समझ पाते थे कि क्या बातचीत हो रही है। The time of Mahaprabhu, the world headquarters for philosophers was Navadvip. उन दिनों जितने भी दर्शन थे, दार्शनिक लोगों का जो मुख्य हेडक्वार्टर था पूरे संसार में वो नवद्वीप था। So all the philosophers of the world in those days meant India. It didn't mean Europe was just a bunch of, primitives, running around. Maybe there was something going on over there, the fallen kings, and Vikings with their helmets, whatever. There were kings by the time Mahaprabhu was on the planet, but the whole thing was very fallen. तो उस समय विश्व का अर्थ मुख्य भारत ही होता था, क्योंकि बाकी जितने देश हैं यूरोप वगैरह में वो तो बहुत ही पिछड़े देश होते थे उस समय, जो इधर-उधर वहाँ के लोग भाग रहे होते थे। Maybe the Vikings or something earlier, but point is that it was called by historians the Dark Ages in Europe was not culturally developed. They were in Maya. तो उस समय वो उनकी जो सभ्यता थी इतनी विकसित नहीं थी, माया में थे। The Renaissance in Europe took place. Renaissance means the revival. It took place because of the presence of Mahaprabhu on the planet. You see, his lotus feet on the planet caused a resurgence of culture and some semblance of civilization in Europe. You see. और यूरोप में रेनेसेंस महाप्रभु की उपस्थिति से आया, क्योंकि उनके चरण कमल इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो इसलिए वहाँ की संस्कृति में पुनः थोड़ा विकास हुआ। So in Navadvip there the philosophical debates. So some big shots would come, big philosophers come riding in on elephants, तो उस समय बड़े-बड़े दार्शनिक लोग हाथी पर सवार होकर वहाँ नवद्वीप में आते थे। But sometimes they would be defeated. और कभी-कभार वो पराजित भी होते थे। Of course, Nimai Pandit would defeat all of them. और निश्चित रूप से निमाई पंडित तो सभी दार्शनिकों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो भी उनको पराजित कर देंगे। Chaitanya Mahaprabhu describes that the defeated party was driven into the Ganga. Yes. The defeated party was driven into the Ganga with sticks and stones by the winners. This was their recreation. तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि ऐसा दार्शनिक जो पराजित हो जाए उसको लोग पत्थर और छड़ी मार मार कर गंगा की ओर ले जाते थे उसमें डुबोने के लिए, और उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ता था। ये चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है। यह समय का मनोरंजन था। The point is that when there was a philosophical debate taking place between Mahaprabhu and all these atheists and Buddhists, there was a crowd, and when the crowd saw the surrender of the Buddhists, when they saw them with their own eyes and ears, when they saw that the Buddhists were surrendering to Mahaprabhu, so therefore they were struck with wonder, they were astonished. और जब वहाँ एकत्रित सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बौद्ध आचार्य और उनके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु को शरणागत हो रहे हैं, तो वे बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। So that is the completion of that particular pastime. तो इस लीला का यहाँ पर इसकी लीला पूर्ण होती है। But it made them all into devotees, so everybody there became a devotee on the spot. Whoever was there, but observers obviously would become devotees also, as well as the Buddhist demons became devotees. So wherever Mahaprabhu went, even demons became devotees. तो उसी समय तुरंत वहाँ पर जितने एकत्रित लोग थे, बौद्ध तो वैष्णव बने ही, वहाँ पर जितनी भीड़ इकट्ठी थी वो सब भक्त बन गए, और यही महाप्रभु का उद्देश्य था। कहीं भी जाते थे जो लोग हैं वो वैष्णव में परिवर्तित हो जाते थे। In the West, we see that in the history of the movement, sometimes there would be some demons who would, maybe throw some tomatoes at the devotees or something like that and harass them verbally and so forth. Demons. इस आंदोलन के इतिहास में भी हम देखते हैं, विशेषकर पाश्चात्य जगत में ऐसे लोग थे, असुर थे,
और कभी भक्त जाते थे उन पर वो टमाटर वगैरह फेंका करते थे। But at least one case, by associating with devotees and hearing the holy name, such a demon became purified. परंतु मैं एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा केस जानता हूँ कि जिसमें जो ऐसा व्यक्ति व्यवहार कर रहा था वो भक्तों की किसी तरह संग में आया, भगवान के पवित्र नाम सुनने से उसने श्रीला प्रभुपाद को अपने आप को समर्पित किया। So we see how Sri Prabhupada was carrying on the pastime of Mahaprabhu from demon harassing the devotees, bad language and throwing maybe rotten tomatoes or something, to surrendering to Prabhupada. So that is the Shakti of Mahaprabhu, President Prabhupada. तो हम देखते हैं कैसे श्रीला प्रभुपाद महाप्रभु की सारी लीलाओं को आगे कैरी कर रहे हैं, और इस घटना में भी तो कैसे वो एक व्यक्ति था, असुर था, भक्तों को अपशब्द कहता था, उन पर टमाटर फेंका करता था, परंतु श्रीला प्रभुपाद की कृपा से वो शरणागत हुआ और वैष्णव बना। I don't remember the name. मुझे उसका नाम नहीं पता, याद नहीं है। But even more astonishing is later on, that same person, after surrendering Prabhupada, became a sannyasi. तो मेरे को उसका नाम याद नहीं है, परंतु इसमें और अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि वो आगे चलकर एक सन्यासी बना। You gotta understand, Prabhupada 100% carried with him the vesh of Mahaprabhu. Try to understand the relationship there. इस संबंध को समझने का प्रयास कीजिए जो श्रीला प्रभुपाद ने 100% महाप्रभु के आवेश को लेकर चल रहे थे। And from the spiritual world, without any material body, he's still fully carrying the avesh of Mahaprabhu, and we are still taking the benefit. And the devotees in this movement who are preaching Krishna consciousness are still being empowered by Srila Prabhupada from the spiritual world. Try to understand. और आध्यात्मिक जगत से, हालांकि उनका कोई भौतिक देह नहीं है, आध्यात्मिक जगत से अभी भी वर्तमान में वो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आवेश को कैरी कर रहे हैं, और इस आंदोलन के भक्त उनके इस आवेश का, उनके उपस्थिति का लाभ उठा रहे हैं, उठा सकते हैं। If that weren't so, this movement would have collapsed by now. अगर ऐसा नहीं होता तो यह आंदोलन अब तक पूरा ढह जाता। So what's 2017 take away 1977? What is it? Who's good at math in their brain? I'm not good at math in that. 1973 1977 से 2017 कितने वर्ष हुए? Punch it out. 2017. 40 years? So Srila Prabhupada left the planet 40 years ago, and the movement is still going strong. That's only possible by his avesh. That's a fact. Otherwise, with absent his avesh, this movement would have collapsed long ago. Would have collapsed long ago. श्रीला प्रभुपाद इस पृथ्वी से प्रकट हुए 40 वर्ष पूर्व, और अभी 40 वर्ष तक ये आंदोलन आगे चल रहा है, विस्तार हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ श्रीला प्रभुपाद के आवेश के कारण है, नहीं तो बहुत पहले ये आंदोलन खत्म हो जाता। So then text 63. So this was the completion of Mahaprabhu's pastime with the demoniac Buddhists who became converted, who were actual devotees, real devotees, instant devotees. तो यहाँ पर ये लीला का समापन होता है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी बौद्ध वर्ग के लोग थे उनको वैष्णव में परिवर्तन किया, असली में वो वैष्णव बने। Text 63. Sri Caitanya Mahaprabhu, the son of Sachidev, then suddenly and flagrantly disappeared from everyone's sight, and it was impossible for anyone to find him. तब सच्ची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा आंखों से नाटकीय ढंग से ओझल हो गए और उन्हें कोई ढूंढ नहीं सका। So now 64. तब प्यार संख्या 64 जो बोर्ड पर है। Mahaprabhu chale ayana Tripati Trimale. Mahaprabhu chale ayana Tripati Trimale. Tatabuja Morti Deki Venkatadri Chale. Tatabuja Morti Deki Venkatadri. Mahaprabhu chale ayana Tirupati
Tripati Trimale Chaturbuja Murti Deki Venkata Dvi Chale Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale Chaturbuja Murti Deki Venkata Dvi Chale Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale Chaturbuja Murti Deki Venkata Dvi Chale. See, this word is tricky. Venkatadre. It's a tricky word. ये जो शब्द है बड़ा रहस्यमय है. Venkatadre. वेंकटाद्रिय. Venkatadre. D-R-Y-E, so it's tricky. It's tricky to pronounce. So, Venkatadriya Chale. One more time. Mahaprabhu Chale Ayala Tirupati Tripati Trimale. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Next. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Mahaprabhu Chale Ayala Tripati Trimale. Chaturbuja Murti Deki Venkatadriya Chale. Okay. Translation. Sri Caitanya Mahaprabhu next arrived, so he's continuing his journey now. He's continuing his tour. यात्रा को जारी रखे हैं. Sri Caitanya Mahaprabhu next arrived at Tirupati and Tirumala, where he saw a four-handed deity. That means Balaji. तब श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति तथा तिरुमल आए, जहां उन्होंने चतुर्भुजी मूर्ति देखी, यानी बालाजी को. By the way, Balaji is the oldest deity on the planet. Do you know? क्या आपको पता है जो बालाजी है इस पृथ्वी पर सबसे पुराने विग्रह हैं. It is said that he was from a prior yuga, before the great pralaya. In other words, before the flood that comes at the end of the millennium and it goes up to all the way to Brahmaloka, at the bottom of Brahmaloka, and the Devas
or then on the seashore, so to speak, and then it goes down. And this happens every night. तो बताया जाता है कि ये जो विग्रह हैं पिछले युग से हैं, जब महाप्रलय आती है ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, इससे पहले के विग्रह हैं। So Balaji survived the great pralaya. तो जब बालाजी थे तो ये महाप्रलय Therefore, he's the oldest deity on the planet. इसलिए इस पृथ्वी पर ये सबसे पुराने विग्रह हैं। Also, everybody knows he's self-manifested. ये खुद ही प्रकट हुए। But what you might not know is that Balaji originally had 2 arms. जो चीज आपको शायद ना पता हो वो ये है कि बालाजी के जो सबसे पहले विग्रह थे उनके 2 हाथ थे। But Brahma Madhva, he went there, and his bow is Lord Narayan, or to let Aishwarya formality. So he requested Balaji, you please show forearm for him. परंतु जब रामानुजाचार्य वहां पर गए तो उनका भाव वो जो आराधना करते हैं नारायण रूप में करते हैं ऐश्वर्य भाव में, तब उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप चतुर्भुज को प्रकट कीजिए। So out of love, Balaji added 2 arms. और बालाजी ने प्रेम पूर्वक 2 भुजाएं और प्रकट की। They're not man-made. It's not like an artist, carved 2 arms and they pasted it on. तो ऐसा नहीं है कि उनके जो चतुर्भुज ये जो रूप है इसकी कोई रचना किसी मनुष्य ने की है, नहीं। The rasa of the Lord and devotees, the Lord will serve the devotees. We see this all throughout the Shastra. तो हम यहाँ पर रस देखते हैं भगवान और उनके भक्तों के बीच में। भगवान हमेशा अपने भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। So then Mahaprabhu proceeded towards Venkata Hill. तत्पश्चात वे वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े। So Tirupati, where our Radha Govinda and Asachagi temples down at the bottom of the hill. जो तिरुपति में इस्कॉन का राधा गोविंद अष्टसखी मंदिर इस पर्वत के नीचे है। It is said that the mountain, the Tirumala is the mountain basically, or there's a small, there's a village at the top of the mountain, and Tirumala also refers to the mountain. जो तिरुमल यहाँ पर है, ये जो पर्वत के ऊपर वहाँ पर एक छोटा गांव है, उस स्थान को कहते हैं। It's said that the mountain is a manifestation of Ananta Sesha. ये भी बताया जाता है जो पर्वत है वो अनंत शेष का रूप है। You look at the mountain, you see there are layers, like the coils of a snake. अगर आप उस पर्वत को देखेंगे तो उसमें अलग-अलग प्रकार के लेयर्स हैं, जैसे एक सर्प के अलग-अलग So therefore, it was no big deal that he was there. What is it? 530 years ago now. How many years it is now? 530 years. Huh? This year is celebrated 531. So it was no big deal that Balaji was there 531 years ago because he's such an ancient, practically he's millions of years old. तो उस लगभग 500 वर्ष पूर्व भी जो बालाजी के विग्रह वहाँ पर उपस्थित है। So the purport by Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has actually described the chronological order of Lord Chaitanya Mahaprabhu's visit. श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वास्तव में महाप्रभु की यात्रा का क्रमबद्ध वर्णन किया है। The Tirupati temple is sometimes called Tirupatura. तिरुपति मंदिर को कभी-कभी तिरुपटूर कहा जाता है। It is situated on the northern side of Arcot in the district of Chandragiri. ये चंद्रगिरी जिले में आर्कट के दक्षिण की ओर स्थित है। It is the famous holy place of pilgrimage. ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। In pursuance of his name, Venkateshwar, the four-handed Lord Vishnu, the deity of Balaji, with his potencies named Shri and Bhu, is located on Venkata Hill, about 8 miles. So that's about 16 kilometers. Right? Yes. 12 kilometers. 12 or 13 kilometers. 30 kilometers. 13 kilometers. So वेंकटेश्वर 13 kilometers from Tirupati. So Tirupati is down at the bottom of the mountain, and then apparently it's 13 kilometers up the hill. वेंकटेश्वर चतुर्भुज विष्णु के रूप में बालाजी के अर्च विग्रह हैं, जो अपने नाम के अनुरूप श्री तथा भू नामक अपनी शक्तियों समेत
तिरुपति से लगभग 8 मील यानी 13 किलोमीटर दूरी पर वेंकट पर्वत पर स्थित है। This Venkateshwar deity is in the form of Lord Vishnu, is the form of Lord Vishnu, and the place where he is situated is known as Venkateshwar. ये वेंकटेश्वर अर्च विग्रह भगवान विष्णु के रूप में है और वह स्थान जहाँ पर स्थित है वेंकटेश क्षेत्र कहलाता है। There are many temples in southern India, but this Balaji temple is especially opulent. यद्यपि दक्षिण भारत में अनेक मंदिर हैं, किंतु बालाजी का ये मंदिर अत्यंत वैभवशाली है। A great fair is held there in the month of Ashvina, September, October. यहाँ पर अश्विन मास यानी सितंबर अक्टूबर मास में एक विशाल मेला लगता है। There is a railway station called Tirupati on the southern railway. दक्षिणी रेलवे पर तिरुपति नामक रेलवे स्टेशन है। So Prabhupada always describes the railway stations. तो श्रील प्रभुपाद अक्सर आप देखेंगे तात्पर्य में रेलवे स्टेशन का, so that pilgrims can find these places of pilgrimage for the next Chaitanya. पूरी चैतन्य चरित्रामृत में प्रभुपाद तात्पर्यों में जो रेलवे स्टेशन है उनके नाम भी लिखते हैं ताकि जो तीर्थ यात्री हैं अगर वहां जाना चाहे जाएं। Nimna Tirupati, so that's the city, is located in the valley of Vaikanta Hill. Down means down at the bottom. निम्न तिरुपति वेंकट पर्वत की घाटी पर स्थित है। There are several temples there also, among which are those of Govindaraja and Lord Ramachandra. वहाँ भी अनेक मंदिर हैं जिनमें गोविंद राज तथा भगवान रामचंद्र के मंदिर हैं। At the time that Srila Prabhupada wrote this purport, Govindaraja had been established. That was established by Sri Caitanya Mahaprabhu sometime perhaps in the 80s. निश्चित रूप से जब श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य लिख रहे थे जो हमारे इस्कॉन का वर्तमान मंदिर है तब वो वहाँ पर नहीं था। वो मंदिर राधा गोविंद मंदिर स्वरूप दामोदर महाराज ने 1980 के दशक में वहाँ पर उसकी स्थापना। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? Thank you very much. Shri Granthara Sri Caitanya Charitamrita ki jai. Shri Krishna Baba ki jai. Shri Vigraha ki jai. Nitai Gaur Pramanande Hare Krishna. सोलह भक्ति माधुरी गोस्वामी महाराज की।
शुरू करो।